गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ एएमसीए स्टेल्थ जेट प्रोजेक्ट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने एग्जीक्यूशन मॉडल अप्रूव कर दिया है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का। तो एक स्ट्रेटजिक बूस्ट मिल रही है इंडिया के सेल्फ रिलायंट डिफेंस विजन को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है एग्जीक्यूशन मॉडल एएमसीए का। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर डेवलपमेंट करेगी इस एएमसीए की। एक स्टेल्थ हैवी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा ये। प्लान है कि 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे 15,000 करोड़ के बजट के अंदर। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2024 में ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट जो है वो 2035 रहेगी। फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ क्या होंगे एएमसीए के? तो ये ट्विन इंजन 25 टन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें एडवांस स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इंटरनल वेपन्स बेस होगा, सेंसर फ्यूजन होगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी और डीप पेनिट्रेशन मिशंस में ये जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 6.5 टन होगी। एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए जो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होगी ताकि डाउन टाइम रिड्यूस हो। रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सूट्स होगा और सीमलेस इंटीग्रेशन होगी यूएवीज़ के साथ। और इंटरनल बे जो है वो लगभग 1500 किलो का जो है वो वेपन लोड कैरी कर सकेगा। 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस। एएमसी के फीचर जो है इसको सेम लीग में डालेंगे जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं F-35, सुखोई 57, चेंगडू, J-20। ठीक है। एएमसी का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है और इंडिया जो है वो एक लीड ग्रुप ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर रहा है जिसके पास कटिंग एज एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ होंगी। कंपैरेटिव प्लेटफॉर्म्स अगर हम देखें F-35 तो वो स्टेल्थ और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ जो है इंटरनल फ्यूल कैपेसिटीज़ के साथ, जिसमें 18,000 पाउंड से ज़्यादा है कैपेसिटी, वो ऑफ़र करता है और पेलोड्स भी 18,000 पाउंड तक के ऑफ़र करता है। रशिया का Su-57 सुपरसोनिक स्पीड्स और हाई मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ़र करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, चैलेंज कहाँ रहेगा? एक अप्रोप्रिएट इंजन बनाने में। करंट प्लान जो है वो ये है कि जॉइंट वेंचर होगा एक किसी ना किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ एक नेक्स्ट जेन इंजन बनाने के लिए। डीआरडीओ ने फिर भी कमिट किया है कि वो फर्स्ट ऑपरेशनल एएमसीए यूनिट 2035 तक डिलीवर करेंगे। तो एक शिफ्ट है लेगेसी 3rd और 4th जनरेशन प्लेटफॉर्म से हम सीधा जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की तरफ जा रहे हैं। और एक एवोल्यूशन है ये इंडिया के डिफेंस डॉक्ट्रिन की, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी, सर्वाइवेबिलिटी और फोर्स मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑयल स्पिल्स। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइबेरिया फ्लैग्ड कार्गो शिप कैप्साइज हो गया और सैंक हुआ है केरला के कोस्ट पर। इससे कंसर्न्स रेज हो रही हैं कि क्या पता इससे ऑयल स्पिल भी हो। तो कैप्साइजिंग कैसे हुई है? एक फ्लडिंग हुई एक एरिया में, कार्गो होल्ड्स के एरिया में और जो है इस शिप के। तो शिप जो है वो डिपार्ट हुआ था विजिंजम पोर्ट से और कोची जा रहा था और उसके बीच में ये इंसिडेंट हुआ। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसी टाइम एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जो एडवांस्ड ऑयल स्पिल मैपिंग टेक्नोलॉजी जिसके पास है, ताकि सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके। अभी तक कोई ऑयल स्पिल रिपोर्ट तो नहीं हुआ, बट ऑयल स्पिल होता क्या है जब ऑयल एक्सीडेंटली ओशंस, रिवर्स या सीज़ में एंटर कर जाता है किसी न किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से या इक्विपमेंट फेलियर की वजह से, तो वो क्विकली फैल जाता है और एक लेयर बना लेता है वाटर सरफेस पर बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर डेंसिटी। तो जो ये ऑयल लेयर है ये सनलाइट को भी ब्लॉक कर देती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। बर्ड जो है वो अपनी इंसुलेशन लूज़ करते हैं क्योंकि ऑयल कोट हो जाता है उनके फैदर पर, तो उस वजह से वो हाइपोथर्मिया या ड्राउन भी हो जाते हैं। फ़िश और इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो उनको रिप्रोडक्टिव या ग्रोथ इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। तो सीवियर स्पिल्स की वजह से जो है वो कई बार डेकेड लॉन्ग इम्पैक्ट भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम 2010 का डीप वाटर हॉराइजन डिज़ास्टर देखें जिसमें 4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो 87 डेज़ में इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको स्प्रेड हुआ था, उससे थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मर गए थे। तो ऑयल स्पिल की प्रिवेंशन को रोकने के लिए, ऑयल स्पिल की प्रिवेंशन जो है उसको गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसको मार्पोल कन्वेंशन कहते हैं, वो साइन किया गया है 1978 में। इसका एक की प्रोटोकॉल भी साइन किया गया, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इसमें 6 तरह के जो है वो पोल्यूशन की फॉर्म्स को जो है कवर किया जाता है। ऑयल, नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस, डेंजरस गुड्स इन पैकेज फॉर्म, सीवेज, गार्बेज, एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। और इंडिया में इसको इन्फोर्स किया जाता है थ्रू मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो भी रिसेंटली पास हुआ है।
तो इसमें प्रोविजंस हैं सिविल लाइबिलिटी के, पॉल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट्स के, और पोर्ट्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके पास ऑयल स्पिल कंटेंजेंसी प्लान्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 10 साल में इंडिया के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ 20% से ही ग्रो हुआ है, जबकि एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स जो है वो लगभग 150% से आसपास जो है वो ग्रो हुए हैं। तो ये ट्रेंड्स अनफोल्ड हो रहे हैं और हमें जैसे जैसे इंडिया FTA साइन कर रहा है यूएस या नेगोशिएट कर रहा है यूएस और EU के साथ, जो दोनों पार्टीज़ हैं वो लोअर टैरिफ्स और ग्रेटर एक्सेस चाह रही हैं इंडियन मार्केट्स का अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। तो इंडिया जो है टॉप फार्म एक्सपोर्टर तो है, लेकिन अर्निंग्स डिक्लाइन हो रही हैं मरीन प्रोडक्ट्स के केस में। यूएस के टैरिफ्स भी जो हैं वो लग रहे हैं, तो उससे जो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट हो रही है। अगर हम राइस के कंटेक्स में देखें, कंबाइंड बासमती और नॉन बासमती जो है राइस एक्सपोर्ट्स वो $12.5 बिलियन हिट किए हैं, और बासमती जो है वो वेस्ट एशिया जाता है, नॉन बासमती अफ्रीका जाता है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वीट और शुगर के कंटेक्स में पीक पर आ गए हैं, लेकिन अब जो है डोमेस्टिक शॉर्टेजेस की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है उन्हें। कॉटन जो है, इंडिया एक टाइम पर मेजर कॉटन एक्सपोर्टर होता था, लेकिन अब नेट इंपोर्टर बन चुका है उसका। फिर अगर हम देखें स्पाइसेस के केस में, इंडिया ने रिकॉर्ड हाइज जो है वो बोथ स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो है अचीव किए हैं, और इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है नॉन ट्रेडिशनल स्पाइसेस का, लेकिन नेट इंपोर्टर है ट्रेडिशनल प्लांटेशन स्पाइसेस का, जैसे पेपर और कार्डमम। तो इंडिया के जो टॉप फार्म इंपोर्ट्स हैं वो अभी भी एडिबल ऑयल्स और पल्सेस हैं। प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है। अगर हम कॉटन को देखें, नेचुरल रबर के केस में हमें एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 8.5 लाख टन्स दिख रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जब हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो US, EU, UK वो इंडिया को जो है वहाँ से इंडिया के लिए इंडिया जो है वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, वाइन्स और स्पिरिट्स इंपोर्ट करेगा, और US जो है वो इंडिया को ये भी पुश करेगा कि वो लो इंपोर्ट ड्यूटीज़ करे और रिलैक्स करे नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि मेज़, सोयाबीन और कॉटन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रॉडटेप स्कीम। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो रॉडटेप स्कीम है उसके अंदर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो रिस्टोर किए जा रहे हैं। रॉडटेप स्कीम जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर 2015 से 20 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी अमेंडमेंट के थ्रू, और 2021 से ये इफेक्टिव थी स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ होती हैं एक्सपोर्टेड गुड्स में जो इंकर की जाती है उन्हें ऑफसेट किया जा सके। तो बेसिकली एक्सपोर्टर्स को जो एम्बेडेड ड्यूटीज़, टैक्सेस या लीवाइज होते हैं वो रीइंबर्स कर दिए जाते हैं, जो अभी किसी और स्कीम में उनको रीइंबर्स नहीं होते, तो इस स्कीम के अंदर उनको रीइंबर्स किए जाते हैं। WTO कंप्लाइंट स्कीम है ये, और इसको एनफोर्स किया जाता था कि रिपील और रिड्यूस की जा सके टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो एडमिनिस्टर करता है स्कीम को। तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म देते हैं कि कैसे रीइंबर्समेंट होगी टैक्सेस की, ड्यूटीज़ की, लीवाइज की, जो करंटली अभी तक रिफंड नहीं किए गए हैं किसी भी अदर स्कीम के अंदर, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पर हो। और ये सभी सेक्टर्स के अंदर जो है ये अप्लाई होता है जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है। इवन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो या एक्सपोर्टर ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं क्लेम करने के लिए बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वो भी एलिजिबल होते हैं स्कीम के अंदर। री एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोंड पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले हैं आर्टिस्ट एंड रेजिडेंस प्रोग्राम के अंडर। तो गोंड पेंटिंग क्या है? एक फेमस फोक आर्ट है गोंड ट्राइबल कम्युनिटी का सेंट्रल इंडिया के। तो इसमें नेचर, फॉरेस्ट, वाइब्रेंट एनिमल्स, सन, मून, स्टार्स, इन सबको पेंट किया जाता है। स्टोरीज ऑफ डीटीज़ लाइक भीमा और पार्वती जो है वो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी होती हैं इसमें। तो ईच गोंड आर्टिस्ट जो है वो अपनी डिस्टिंक्टिव पैटर्न और स्टाइल यूज़ करता है। डॉट्स, फाइन लाइंस, कर्व्ड लाइंस, डैशेस, फिश स्केल्स एट्सेट्रा, ये सब जो है इसमें कवर होता है। मधुबनी पेंटिंग क्या है? ओरिजिनेट हुई मिथिला रीजन ऑफ बिहार से, ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय विमेन है। इसमें हिंदू माइथोलॉजी डिपिक्ट की जाती है, रामायण, डेली लाइफ इन इंडिया, और ऑफ्टन इसमें डीटीज़ जैसे कृष्ण, दुर्गा और सरस्वती जो है वो कवर की जाती हैं। मड वॉल्स और क्लॉथ पर इसको हिस्टोरिकली पेंट किया जाता था विमेन द्वारा, लेकिन अब इसको पेपर और कैनवस पर भी पेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केर सांगरी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की फेमस डिश है केर सांगरी, उसको GI टैग मिल गया है।
तो राजस्थान की डेलिकेसी है जिसको सांगरी पॉड्स जो कि खेजड़ी ट्री से सोर्स किए जाते हैं उसको यूज़ करते हुए बनाया जाता है। केर बेरीज जो होती हैं जो केर ट्रीज पर उगती हैं उनका यूज़ करके बनाया जाता है। बोथ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये थार डेजर्ट के जो है वो नेटिव हैं। केर बेरीज जो है वो वैसे बेटर होती हैं और रॉ जब ये रॉ होती हैं, लेकिन जब इसको सोक करके बॉईल करके कुक किया जाता है सांगरी के साथ, कर्ड के साथ, रेड चिलीज़ और स्पाइसेस के साथ, तब ये डिलीशियस बन जाती हैं। केर सांगरी जो है वो हाई इन फाइबर है, लो इन फैट है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है और इसको लोग वहाँ पर बाजरा रोटी और घी के साथ कंज्यूम करते हैं। सांगरी बीन जो है वो खेजड़ी ट्रीज़ पर जो है वो उगाई जाती है जो कि सीक्रेट है राजस्थान में। तो जीआई टैग क्या होता है? एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन टैग जिसमें कि एक प्रोडक्ट को उसकी रेपुटेशन मिलती है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ओरिजिन का है। चाहे चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, फूड स्टफ हो, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों, उनको सबको ये जीआई टैग मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनवर मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनलाइज किया है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 500 इनवर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का फ्रॉम स्ट्रेट रन भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इनवर मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया जाता है फ्रॉम टैंक प्लेटफॉर्म्स। इनवर मिसाइल जो है वो केपेबल है फायर करने के लिए फ्रॉम बैरल्स ऑफ T-90 टैंक्स। इनवर मिसाइल को असल में तो रशिया ने बिल्ड किया है, लेकिन इसको भारत डायनामिक लिमिटेड जो है वो एक लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस करता है। सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, लेज़र बीम राइडिंग है, जैमिंग इम्यून है और डिस्ट्रॉय कर सकता है स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स को विद स्पीड्स अप टू 70 किलोमीटर पर आवर। और इसकी हाई हिट और हाई किल प्रोबेबिलिटी है। 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's AMCA stealth jet project. This topic is important for your security section. Defense Minister Rajnath Singh ji has approved the execution model for the Advanced Medium Combat Aircraft program. So this will be a strategic boost to India's self-reliant defense vision, where Ministry of Defense has approved this execution model for AMCA. Aeronautical Development Agency, in collaboration with private industry partners, will spearhead the development of AMCA, which is a stealth-heavy multi-role aircraft. The plan is to produce 5 prototypes under a budget exceeding 15,000 crore. Cabinet Committee on Security, led by Prime Minister Modi, has approved this full-scale engineering development in 2024 with a projected delivery date of 2035. AMCA is envisioned as a twin-engine, 25-ton aircraft equipped with advanced stealth characteristics, including internal weapon base, sensor fusion, and super cruise capability. These features are designed to significantly reduce radar visibility, allowing the aircraft to engage in deep penetration missions and precision strikes with minimal detection. So, the key technological highlights of the AMCA include internal fuel capacity of 6.5 tons, electronic pilot AI assisted decision making system, integrated vehicle health management where predictive maintenance will be there for reduced downtime. Weapon load will be the internal bay will be capable of carrying about 1500 kg, including four long range air to air missiles and precision guided missiles or munitions. AMC's features put it in the same league as that of USA's F-35, Sukhoi Su-57 of Russia, and Chengdu J-20 of China. So AMCA project aligns with India's Atmanirbhar Bharat initiative. After developing this fifth generation stealth platform, India will join an elite group of countries which have cutting edge aerial combat capabilities. Comparative platforms like F-35 offer stealth and combat capabilities with internal fuel capacities exceeding 18,000 pounds and payloads of up to 18,000 pounds also. While Russia's Su-57 boasts supersonic speeds and high maneuverability. But the critical challenge would be in developing an appropriate engine. The current plan involves a joint venture with a foreign original equipment manufacturer to develop a next generation engine which meets thrust, efficiency, and stealth requirements. DRDO has still committed to delivering the first operational AMCA unit by 2035. So we are shifting from a legacy third and fourth generation platforms like MiG-21, Mirage 2000, and even Tejas Mk1 towards the fifth generation stealth fighter. This embodies the evolution of India's defense doctrine into one which prioritizes technology superiority, survivability, and force multiplication.
The next topic is oil spills. This topic is important for your environment section. So, a Liberian flagged cargo ship recently capsized and sank off Kerala coast. This incident has raised concerns about a possible oil spill. So, this cargo ship capsized due to flooding in one of its cargo holds. The ship departed from Vizinjam port and was headed towards Kochi. And Indian Coast Guard deployed aircraft with advanced oil spill mapping technology to monitor the situation. As of now, no oil spill has been reported. Oil spill occurs when oil accidentally enters oceans, seas, or rivers due to natural disasters, human error, or equipment failure. It spreads quickly and forms a layer on the water surface because of its lighter density. The oil layer blocks sunlight, affecting photosynthesis in marine plants and phytoplankton, which are crucial for oxygen production and food chains. Birds lose insulation as oil coats their feathers, leading to hypothermia and drowning. Fish and invertebrates may suffer reproductive and growth issues, as noted by the US EPA. Okay, severe spills can have decades-long impacts. For example, 2010 Deepwater Horizon disaster released over 4 million barrels of oil over 87 days into the Gulf of Mexico, killing thousands of wildlife. Oil spill prevention is governed by the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, that is MARPOL Convention. MARPOL includes 6 annexes covering pollution from oil, noxious liquid substances, dangerous goods in packaged form, sewage, garbage, air pollution from ships. In India, it is enforced through the Merchant Shipping Act, which includes provisions for civil liability and pollution prevention certificates. Ports must have oil spill contingency plans also. Okay. So the next topic is free trade agreements and Indian agriculture. This topic is important for your economy section. In the last 10 years, India's agriculture exports grew modestly by just over 20%. In contrast, agriculture imports surged by 148% during the same period. These trends are unfolding as India is negotiating FTAs with US and EU, both of which are pushing for lower tariffs and greater access to Indian markets for their agriculture products. So, in India, in context of marine products, India is the top farm exporter, but earnings have declined. There are also concerns of US tariffs on frozen shrimp, which could rise further, affecting competitiveness. In context of rice, the combined basmati and non-basmati rice exports have hit $12.5 billion in the recent years. Basmati is exported to West Asia and non-basmati to Africa. Okay. Similarly, in wheat and sugar, exports have peaked recently. Cotton, in context of cotton, India was once a major cotton exporter, but now it is turning into a net importer. We have an interesting case of spices as well, where India witnessed record highs in both spice exports and imports. While it remains a leading exporter of non-traditional spices, we have become a net importer of traditional plantation spices like pepper and cardamom. India's top farm imports remain edible oils and pulses. Production has also declined of cotton, and in context of natural rubber, annual production has averaged 8.5 lakh tons. So the signing of trade agreements with US, EU, and UK is expected to increase India's imports of dry fruits, wines, and spirits. Of course, US will try to push for lower import duties and relax non-tariff barriers on genetically modified crops like maize, soybean, and cotton. Okay. So the next topic is RODTEP scheme. This topic is important for your economy section. Recently, the government of India has announced the restoration of benefits under the RODTEP scheme for exports made by advanced authorization holders, export-oriented units, and even those units operating in SAYS. So this RODTEP scheme was introduced through an amendment to the foreign trade policy of 2015 and 20, and it became effective for exports starting January 2021. The primary aim of this scheme is to offset the taxes and duties incurred on exported goods. It is designed to reimburse exporters for embedded duties, taxes, and levies which are not otherwise refunded under any other existing scheme. It is compliant with WTO norms. It was enforced to
repeal and reduce taxes on exported products. The scheme will be administered by the Department of Revenue. The scheme provides a mechanism for reimbursement of taxes, duties, and levies, which are currently not being refunded under any other mechanism at the central, state, and local levels. RODTAP scheme applies to all the sectors involved in the export of goods. Special economic zone units and export oriented units are also eligible to claim the benefits under the scheme. Goods exported through e commerce platforms are also eligible under the scheme. Re exported products are not eligible under the scheme, also. Okay. So the next topic is Gond painting and Madhubani painting. This topic is important for our art and culture section. Recently, a group of artists called on the President of India as part of the Artists in Residence program in Rashtrapati Bhavan. So what is Gond painting? It is a famous folk art of the Gond tribal community of central India. So it features nature, forests, vibrant animals, sun, moon, and stars. It also includes mythological stories of deities like Bhima and Parvati. Each Gond artist uses his distinctive pattern and style to fill the images. These style signatures are used in collage to make a complete picture, such as dots, fine lines, curved lines, dashes, fish scales, etc. What is Madhubani painting? It originated in the Mithila region of Bihar and was traditionally created by women. It depicts Hindu mythology, Ramayana, and daily life in India. It often depicts deities like Krishna, Durga, and Saraswati also, and it also includes festivals like Holi and Tusar. It was historically done on mud walls and cloth by women, and now it is found on paper and canvas as well. So the next topic is Kair Sangri. This topic is important for art and culture section and also our economy section. Recently, Rajasthan's famous dish Kair Sangri has received a GI tag. So Kair Sangri is a Rajasthani delicacy made using sangri pods sourced from hardy kejri trees and kair berries which are grown on kair trees. Both these ingredients are native to the arid regions of Thar Desert. Kair berries otherwise taste bitter when they are raw, but become delicious after being soaked, boiled, and cooked with sangri, curd, red chilies, and spices. Kair sangri is not just tasty but also healthy. It is also high in fiber, low in fat, and rich in nutrients. People in Rajasthan usually eat it with bajra roti and ghee. Sangri beans grow on the khejri trees, which is sacred in Rajasthan. So, what is GI tag? It is a specific geographical origin tag for a product which possesses qualities or reputation which are due to that origin. It is typically used for agricultural products, foodstuffs, wine, spirit drinks, handicrafts, and industrial products. Okay. So the next topic is Invar missile. This topic is important for your security section. Ministry of Defence has finalized a procurement order for 500 Invar anti-tank guided missiles from state-run Bharat Dynamics Limited, with the deal expected to be worth between 2,000 crore to 3,000 crore. So this Invar missile is an anti-tank guided missile to be launched from tank platforms. It is capable of being fired from the barrel of T-90 tanks. Invar missile is built by Rosoboron Export of Russia, but it is produced under the license in India by Bharat Dynamics Limited. The missile is of semi-automatic control system, laser beam riding, and jamming immune. It is equipped with a tandem warhead. It can destroy stationary and moving targets with speeds up to 70 km per hour. It has a high hit and kill probability as well, and it has a range of up to 5 kilometers. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.